Shall we commence our service this morning with a word of prayer? Loving Heavenly Father, प्यारे your स्वर्गीय पिता, grace and goodness towards each one of us. Lord, you're a God who is rich in mercy. आप हमारे परमेश्वर हैं जो दया में प्रभु जी धनी हैं। We thank you for your abundant supplies here in this ground. प्रभु जी इस परिसर पर, इस कैंपस पर प्रभु जी आपका बहुतायत से आशीष हो। Thank you for the supply of water. Thank you for the supply of electricity. प्रभु जी बिजली की सप्लाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं And thank you for the supply of your precious word. आपके अनमोल वचन की प्रभु जी पूर्ति के लिए आप हमका धन्यवाद करते हैं। Lord, you said, I have come as a light into the world. आपने कहा प्रभु जी मैं ही इस जगत का ज्योति हूँ और आप भी इस जगत के लिए ज्योति ठहरेंगे। Lord, we pray that you would enlighten our hearts this. आज प्रभु जी हमारे दिल को आप अपने उजाला से भर दीजिए। We confess, Lord, there is so much to learn. प्रभु जी कितना आपसे और सीखने की जरूरत है And to relearn. और बहुत सी चीज़ों को प्रभु जी हमें छोड़ना भी है Help us, we pray. और प्रार्थना प्रभु जी करने में हमें सिखा। Thank you for your gracious spirit that testifies of the Christ too. और आपका जो प्रभु जी जो ज्ञान प्रभु जी जो और आप प्रभु जी हमें समझने की शक्ति देते हैं उसका आपका धन्यवाद करते हैं। Take charge of this morning session, we pray. प्रभु जी ये जो भाग हैं प्रभु जी आप ही उसे उसके लिए हम तैयार कर। Lead us now, we pray. हमारी अगुवाई कर हम प्रार्थना करते हैं In Jesus' precious name. यीशु मसीह के अनमोल नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let us stand and sing together that wonderful hymn, I'm pressing on the upward way. Hymn number 22 in your hymns and choruses book. I'm pressing on the upward way, new gaining every day.
செய்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். దయచేసి కూర్చోనండి. We have some choruses now by Brother Caleb. Then Reverend David Campbell will lead us in God's Word. Let's sing chorus number 30, from Sing Unto the Lord. Blessed be the name of the Lord. Glory to 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 the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Let's turn to our supplement and we'll sing song number 2, Jesus Messiah, Lord of all. He became sin, who that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners,
Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world, Jesus Messiah. Let's all sing. Name above all names, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all. Now, Brother David Campbell will bring us God's word. Good morning, everyone. हर किसी को नमस्ते। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Lovely to be alive and gathered here today to worship the Lord, to sing His praises. जिंदा होना और यहाँ पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति गाना ये बड़ा अच्छा है। God has blessed us with life and He has given us the greatest gift of all, eternal life. परमेश्वर ने हमें जीवन देकर आशीषित किया है और सबसे महान उपहार अनंत जीवन देकर उन्होंने हमें आशीषित किया है। This life on earth will end, but bless God, we have a glorious hope that will never end. धरती पर ये जीवन खत्म हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की स्तुति हो, हमें ऐसा जीवन मिल। Based upon what we thought about yesterday morning, the death of the Lord Jesus Christ, you remember that the soldiers that crucified the Lord Jesus and those who stood around the cross, they witnessed something extraordinary. Yes, done. They witnessed the most amazing, tragic, and yet significant event that this world has ever witnessed. उन्होंने सबसे ज्यादा दुखद मृत्यु, फिर भी सबसे ज्यादा महिमापूर्ण मृत्यु को उन्होंने देखा। Hebrews 7th chapter and the 26th verse. इब्रानियों 7:26। For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. इब्रानियों 7:26। यह उचित ही था कि हमारे पास ऐसा महायाजक हो जो पवित्र, निर्दोष, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्गों से भी ऊंचा किया गया हो। So let us bow before Him in prayer. आइए हम प्रार्थना में स्वरों को झुकाएं। Lord, we thank You for Your presence with us into this new day. प्रभु, इस नए दिन में
हमारे साथ आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for the privilege of coming to worship the Lord who is alive forevermore. आपने हमें यहाँ पर आके उस परमेश्वर की आराधना करने का अवसर दिया जो कि जीवन है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you that you have delivered us from the worship of dead idols and dead religion. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने मरी हुई मूर्तियों से और मरे हुए धर्म की पूजा करने से हमें छुटकारा दिया है। Thank you that you have raised us up to sit in heavenly places in Christ Jesus. हम आपको धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए आपने हमें ऊपर उठाया है। We pray for your presence and for your help here this morning. हम आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी सहायता के लिए इस सुबह प्रार्थना करते हैं। We pray that thou wilt speak to us through your word today. हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, Without thee we can do nothing, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते, but I can do all things through Christ which strengtheneth me. परंतु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। I pray in Jesus' holy name. मैं यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। Let us read together from the word of God. आइए हम इकट्ठे परमेश्वर के वचन में से पढ़ें। The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 1. पहला कुरिन्थियों 15:1। Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand. पहला कुरिन्थियों 15:1। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो। By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। And that he was seen of Cephas, then of the 12. तब वह कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया। After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. इसके पश्चात वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से अधिकांश अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। After that he was seen of James, then of all the apostles. तब वह याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को। And last of all he was seen of me also, as one born out of due time. और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे समय का जन्मा हूँ। Against the darkest moment in all of history, मैं ये सोचता हूँ पूरे इतिहास का सबसे अंधकार में समय, there came the most glorious and victorious moment. एक बहुत महिमा में और जीत से भरा हुआ समय आया। Remember when indeed the Roman soldiers were placed around the tomb of Christ? याद कीजिए जब रोमी सैनिकों को मसीह की कब्र के इर्द गिर्द रखा गया था, So that they would guard it from anyone coming to steal away the body of Christ. ताकि वो किसी को आकर यीशु मसीह के शरीर को चुरा के ना ले जाने दें। But death could not hold its prey, Jesus my Savior. परंतु मृत्यु अपने शिकार को पकड़ के नहीं रख सकी। हे यीशु मेरे उद्धारकर्ता, He tore the bars away, Jesus my Lord. उन्होंने जंजीरों को तोड़ के फेंक दिया। यीशु मेरे प्रभु, Up from the grave he arose with a mighty triumph over his foes. और मृत्यु कब्र से वो ऊपर उठा एक बड़ी जीत के साथ। He rose victorious over the dark domain, and he lives forever. जीत से उठा, अपने दुश्मनों पर जीत के साथ वो जीत से उठ गया। अंधकार के ऊपर उसने जय पाई He lives forever with the saints to reign. और वो संतों के साथ राज्य करने के लिए हमेशा जीवित रहता है।
those Roman soldiers that were put on guard around the tomb of Christ, उन रोमी सैनिकों को जिनको मसीह की कब्र के इर्द गिर्द सुरक्षा करने के लिए रखा गया था, they were top security men. वो सबसे अच्छे सुरक्षा वाले व्यक्ति थे, So that indeed would they, Jesus said he would rise after 3 days, क्योंकि यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जीवित हो जाएंगे, and they wanted to put to death that possibility. और वो इस संभावना को खत्म करना चाहते थे। But on the first day of the week, early in the morning, परंतु सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही again the earth trembled with a mighty earthquake. फिर से धरती एक बड़े भूकंप के कारण कांप गई। A mighty angel came down from heaven एक बड़ा स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आया and rolled away the stone. और पत्थर को लुढ़का दिया। Someone said that the angel rolled away the stone किसी ने कहा है कि स्वर्गदूत ने पत्थर को लुढ़का दिया, not to let the living Savior out, इसलिए नहीं कि जीवित उद्धारकर्ता बाहर आ जाए, but to let the unconvinced outsider in. ताकि बाकी सब लोग इस बात को देख सकें। Jesus was not restricted to the ways of men and the walls of cement. यीशु मनुष्य के मार्गों के द्वारा या मनुष्यों की दीवारों में सीमित नहीं किए जा सकते। Jesus could have come out of the tomb without the stone being rolled away. यीशु अगर पत्थर लुढ़का भी नहीं होता, फिर भी वो कब्र से बाहर आ जाते, So that you and I and those who witnessed it may indeed to this day believe that he is alive. ताकि आप और मैं जो आज हम जीवित हैं, हम विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु जीवित हैं, And indeed that the tomb is empty. और सच में वह कब्र खाली है। And that mighty angel was shone with such brightness that the soldiers fell as dead men. और वो शक्तिशाली स्वर्गदूत इतना उज्जवल दिख रहा था कि वहां के सैनिक मृत समान हो गए। And they witnessed that terrible moment indeed. उन्होंने सच में उस भयंकर घटना को देखा When the Lord Jesus Christ rose victoriously over death. जब प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर मृत्यु पर जीत गए। They went immediately and told the chief priests and elders what happened. वो एकदम से भागे और महायाजक को उन्होंने बताया कि क्या हो गया था। And we know that the terrible lie was hatched at that moment. और हम जानते हैं कि They said, उन्होंने झूठ गढ़ा और उन्होंने कहा, the religious leaders said, धार्मिक नेताओं ने कहा, mere religion fears a living savior. नामात्र धर्म जीवित उद्धारकर्ता से डरता है। They said, go and tell the people that the disciples came by night and stole his body away. वो कहने लगे कि चेले रात को आए और यीशु के शरीर को चुरा के ले गए। And they said, if that should come to the ears of the governor, और अगर उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल तक इस बात पहुंची, that we will indeed inform him and secure you. तो सच में उनसे बात करके तुमको बचा लेंगे। You see, for a soldier to fall asleep on duty, अब देखिए, एक सैनिक कर्तव्य करते हुए ड्यूटी करता हुआ सो जाए, was punishable by the death penalty. इसकी सजा मृत्यु होती है, मृत्यु दंड होता है। And all of these soldiers, the lie was told that they all fell fast asleep. और इन सब सैनिकों के बारे में ये झूठ बताया गया कि वो सब गहरी नींद में सो गए थे। You see, Jesus said that Satan is a father of lies. अब देखिए, यीशु ने कहा कि शैतान झूठ का पिता है। Dead religion is built upon a fabrication of lies. मरा हुआ धर्म झूठ के जाल पर बना होता है। Dead religion is the devil's master stroke. मरा हुआ धर्म शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है। There are many people today who believe that religion will get them to heaven.
आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि धर्म उनको स्वर्ग ले जाएगा। They observe the Lord's Day. प्रभु के दिन को वो मानते हैं, They go to a place called a church. गिरजाघर नाम की जगह वो जाते हैं, They partake of the ordinances of the church. गिरजाघर के रीति रिवाजों में वो भाग लेते हैं, They go through the ritual and all the prayers, रीति रिवाज और सारी प्रार्थनाओं को वो करते हैं। but it's dead religion without Christ. परंतु बिना बिना मसीह के वो मरे हुए हैं। Dead religion cannot save a sinner. मरा हुआ धर्म एक पापी को नहीं बचा सकता। And dear friends, today, thank God Jesus is alive. और प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जीवित हैं, And because he lives, we shall live also. और क्योंकि वो जीवित हैं, हम भी जीवित रहेंगे। Jesus showed himself by many infallible proofs to many. यीशु ने कई लोगों को कई सारे ठोस सबूतों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, And upon those proofs, the gospel has been built. और उन सबूतों पर सुसमाचार बनाया गया। In verses 3 and 4 of 1 Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों 15:3-4। for I delivered unto you first of all that which also I received, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे तुम तक how पहुंचा that दिया, Christ died for us according to the scriptures, तुम तक पहुंचा दिया कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. और गाड़ा गया, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। In the 12th verse it says, 12 पद में लिखा हुआ है, Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मृतकों में से जिलाया गया है, तो तुम में से कुछ यह क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? The gospel is built upon the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. सुसमाचार यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर टिका है। But Satan has, through those religious leaders, tried to convince the world of a lie. परंतु शैतान धार्मिक नेताओं के द्वारा दुनिया को झूठ पर विश्वास करने की कोशिश करवाता है, And he has been successful to many to a measure. और वो बहुत हद तक सफल हो गया है। That lie of the devil began in the garden शैतान का वो झूठ बगीचे में शुरू हुआ, अदन के बगीचे में शुरू हुआ, when Satan said to Eve, hath God said? जब शैतान ने हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? He planted doubt in her mind and she fell for it. उसने उसके मन में शंका को बोया और वो उस पर विश्वास कर गई। He continues to seek to plant doubt in the minds of men and women today. आज भी वो पुरुषों और स्त्रियों के मनों में शंकाओं को बोता जा रहा है। How say some among you there is no resurrection? तुम में से कुछ लोग कहते हैं कि कोई पुनरुत्थान है ही नहीं। It is a dangerous delusion of the devil. ये शैतान का बहुत बड़ा भ्रम है। 14th verse, 14 पद, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। It's a damning religion, a damning delusion. And if Christ, it says in verse 17, if Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins. 17 पद, और यदि मसीह नहीं जिलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। It would bring eternal ruin. For in it says here in verse 18, सनातन काल को सामने लाता है। 18 पद, then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
तब तो वे भी जो मसीह में सो गए हैं नाश हो गए। You see now why the devil peddled such a terrible lie. अब देखिए इसे शैतान ऐसी भयंकर झूठ को फैलाने की कोशिश करता है And he used a religion to do it. और इसको करने के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करता है। And today, dear friends, there are many religious people who have never come to the experience of a living Savior. और फिर दोस्तों आजकल ऐसे बहुत सारे धार्मिक नेता हैं जिन्होंने कभी भी जीवित उद्धारकर्ता का अनुभव नहीं किया। And tragic, most tragic of all, they will die and they will perish in their sins. और सबसे बड़ी दुख की बात यह है वो अपने पापों में नाश हो जाएंगे। Many people continue to follow religions. There are many religions in the world today. बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग धर्मों पे चलते हैं। आज दुनिया के बहुत धर्मों को मानते हैं। Friends, there is no religion like this one that we speak of here this morning. फिर दोस्तों जिस धर्म के बारे में आज सुबह हम बात कर रहे हैं उस धर्म के समान कोई धर्म नहीं है। Whose leader, the Lord Jesus Christ, came alive again after the death. पर यीशु मसीह मृत्यु के बाद जीवित हो गए। Multitudes of people today are worshiping idols and are worshiping dead religious ritual. बहुत सारी भीड़ की भीड़ लोग मूर्तियों की पूजा कर रही हैं और मरे हुए रीति रिवाजों को कर रहे हैं। But those of us gathered here, thank God that we have heard the truth. परंतु हम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की स्तुति हो हमने सच्चाई को सुना है। The Lord Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। Jesus came to set us free from dead formal religion. यीशु हमें मरे हुए नाम मात्र धर्म से छुटकारा देने के लिए आए। Jesus came that we might have a living hope, यीशु इसलिए आए ताकि हमें जीवित आशा मिले, a glorious hope. एक महिमा में आशा। The 20th verse of 1 Corinthians 15. पहला कुरिन्थियों 15:20। But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। Thank God this morning that Jesus is alive by many infallible proofs. परमेश्वर की स्तुति हो यीशु आज सुबह जीवित हैं बहुत सारे ठोस सबूतों के द्वारा। And so therefore we can have complete confidence in the glorious gospel. ताकि हम महिमा में सुसमाचार में ठोस विश्वास रख सकें। The Lord Jesus appeared unto Mary after the resurrection. पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह मरियम पर प्रकट हुए। He appeared unto Cleophas and another disciple as they walked the Emmaus road. और वो क्लेophas और जैसे बाकी चेलों के पास जैसे उस सड़क पे जा रहे थे उन पर प्रकट हुए। He appeared unto 500 brethren that were met together. जब 500 भाई इकट्ठे हुए वो उन पर भी प्रकट हुए। He appeared unto the 12 disciples. वो 12 चेलों पर प्रकट हुए। And Paul said, last of all, he appeared unto him. और पौलुस ने कहा अंतिम में वो उस पर पौलुस पर भी प्रकट हुए। As he traveled on the Damascus road towards the Damascus city. जैसे वो दमस्कस की सड़क से दमस्कस की शहर जा रहा था। He was on his way to persecute the Christians in Damascus. दमस्कस में मसीही लोगों को सताने के लिए वो जा रहा था। And a light shone from heaven above the brightness of the sun. और सूरज की चमक के समान स्वर्ग से रोशनी उन पर गिरी। And he fell off the beast that he was riding. और जिस जानवर पर वो सवारी कर रहा था वो उससे गिर गया। And the voice spoke to him and said, "Why persecutest thou me?" और आवाज उसके पास आई जिसने उससे कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। Paul, the Saul of Tarsus, met the Lord Jesus Christ on the Damascus road. तरकस का शाऊल ने दमस्कस की सड़क पर यीशु मसीह से मुलाकात की। It transformed his life completely. इसने उसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। You see, friends, meeting with Jesus transforms lives. अब देखिए दोस्तों यीशु से मुलाकात करना जीवन को परिवर्तित कर देता है। When I met with Jesus, it transformed my life. जब मैं यीशु से मिला
इसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। When these dear brethren met with Jesus, it transformed their lives. जब ये प्रिय भाई लोग मसीह से मिले, यीशु से मिले, इसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। If you have met with Jesus, it will transform your life. अगर आप यीशु मसीह से मिले हैं तो वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। Religion can't transform our lives, धर्म हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, but Jesus is the only one that can change us completely. परंतु यीशु ही एकमात्र वह हैं जो हमें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। If any man be in Christ, he becomes a new creation. और कोई व्यक्ति मसीह यीशु में है तो एक नई सृष्टि है। All things pass away and all things become new. पुरानी बातें बीत गई हैं और हर चीज नई हो गई है। And so therefore we have that great truth in verse 22. इसलिए 22वें पद में हमें महान सच्चाई देखने को मिलती है। For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। We are gathered here today to worship a living Savior. हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जीवित उद्धारकर्ता की आराधना करने के लिए। We have been made alive in Christ. हमें मसीह में जीवित किया गया है। So therefore that's why the devil hates the truth of the resurrection. इसी कारण यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई पर शैतान आक्रमण करने की कोशिश करता है। Because right across the nations many have believed the truth. क्योंकि देशों देशों में बहुत सारे लोगों ने सच्चाई पर विश्वास किया है। They have escaped the awful lie of death. उन्होंने मृत्यु की भयंकर झूठ से छुटकारा पाया है। They have escaped the awful wrath and judgment of a holy God. उन्होंने पवित्र परमेश्वर के भयंकर गुस्से और न्याय से छुटकारा पाया है, दंड से छुटकारा पाया है। And today, because of that glorious truth, the multitudes of the saints populate heaven. And because of that glorious truth, each one of us here can one day populate heaven. और इस महिमा के कारण हम सब एक दिन स्वर्ग में जा सकेंगे। That is, if we place our absolute confidence in the death and in the resurrection of the Lord Jesus. जब हम अपना पूर्ण भरोसा यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पे रखेंगे तब The resurrection of the Lord Jesus, the death and resurrection of the Lord Jesus puts to silence the lie of dead religion and the lie of the devil. और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने शैतान के झूठ को चुप करा दिया, झूठे धर्म के झूठ को चुप करा दिया। Verse 25 says, For he must reign till he hath put all enemies under his feet. 25 पद, जब तक वे अपने सब शत्रुओं को पैरों तले ना कर दे, उसका राज्य करना अनिवार्य है। The last enemy that shall be destroyed is death. 26, सबसे अंतिम शत्रु जिसका अंत किया जाएगा वह मृत्यु है। Verse 55, 55 पद, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? 57, 57, But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। Death died when Christ arose, friends. दोस्तों, जब मसीह जिंदा हो गए तब मृत्यु मर गई। The best news the world has ever heard came from a graveyard. सबसे महान सुसमाचार जो दुनिया ने कभी सुना है वह कब्र से आया था। सबसे बड़ी खुशखबरी। John Calvin said, जॉन कैल्विन जी ने कहा, The resurrection of Christ is the most poignant article of our faith. यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का सबसे मुख्य चीज होती है। It is a wonderful thing to know that Jesus is alive today. ये जानना कि यीशु मसीह आज जीवित हैं, ये बड़ा अद्भुत होता है। And bless God, he's here. और परमेश्वर की स्तुति हो, वह यहाँ पर है। By the person of his Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा व्यक्ति के रूप में He's at the retreat. वो रिट्रीट में हैं।
He's here to meet with us. वो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए हैं। He's here to speak to us. वो यहाँ पर हमसे बात करने के लिए हैं। He's here to minister to us. वो यहाँ पर हमारी सेवा करने के लिए हैं। What's said here from the podium is not going to change anything ऐसा कहा जाता है मन से कुछ बदलाव नहीं होगा unless it is blessed by God the Holy Spirit. जब तक कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित ना किया जाए। And as the Word of God is proclaimed here each day, जैसे रोजाना परमेश्वर का वचन का यहाँ पर प्रचार होता है, God is seeking to bless that truth to all your hearts. परमेश्वर इन सच्चाइयों को आप सबके हृदयों पर आशीषित करने की कोशिश करते हैं, To not only bring you to faith in Christ, ताकि ना केवल वो हमें मसीह पर विश्वास दिलाए, which we praise God today, many have experienced that saving faith. जिसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस बचाने वाले उद्धार अनुग्रह पर विश्वास किया है, But the Lord Jesus, by His Holy Spirit, is here today to help us to understand His will for our life. परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है ताकि हमारे जीवन के लिए उनकी इच्छा क्या है हम इसको समझ सकें, That we might understand ताकि हम समझें the will of the Lord. परमेश्वर की इच्छा को। The will of the Lord is good, acceptable, and perfect. परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होती है, ग्रहण योग्य होती है। And thank God this morning that those who have cast themselves upon the truth of the glorious gospel और परमेश्वर की स्तुति हो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के महिमा में सुसमाचार पर रखा है and have taken that most important step in the will of God. और परमेश्वर की इच्छा में वो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है। But that's just the beginning of a new life. परंतु ये केवल नए जीवन की शुरुआत है। The Lord's word tells us that He wants us to grow up in our faith. परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में बढ़ें। The word of God says, "Let us run the race that is set before us." परमेश्वर का वचन कहता है जो दौड़ हमारे सामने रखी है आओ हम उसमें दौड़ें। Lay aside every sin and the weight that doth beset us. ऐसा ना हो कि पाप या कोई इल्झन हमें पीछे खींच ले। Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. यीशु की ओर देखते हुए जो कि हमारे विश्वास को उत्पन्न करने वाले और सिद्ध करने वाले हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you for the great joy of this glorious truth. प्रभु इस महिमा में सत्य के महान आनंद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you that it is a soul-saving and a life-changing truth. हम आपको धन्यवाद देते हैं ये आत्मा को बचाने वाला और जीवन को बदलने वाला सत्य है। We thank you it is this truth that sets us free from the awful fear of eternal destruction. हमको धन्यवाद देते हैं ये सत्य हमको अनंत नाश के भय से बचा लेता है And from the awful judgment of God. और परमेश्वर के भयंकर दंड से। We thank you that this truth will never pass away. हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सत्य कभी नाश नहीं होगा। It is the eternal truth of God's word. ये परमेश्वर के वचन का अनंत सत्य है, सनातन सत्य है। It is settled in heaven. ये स्वर्ग में टिका है। We pray you'll help us to embrace the truth of God's word. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए कि हम आपके वचन की सत्य को गले लगा सकें, So that we might go forth to live for Him who died for us ताकि हम उसके लिए जी सकें जो हमारे लिए मरा and experience the fullness of the blessing of God. और परमेश्वर की आशीष की भरपूरी का अनुभव कर सकें। In Christ Jesus. मसीह यीशु के In नाम His में name we pray. और उसके नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. The psaltery and harp, let everything that has breath praise the Lord. Praise Him on the trumpet, the psaltery and harp. Praise Him on the timbrel and the dance. Praise Him, stringed instruments too. Praise Him on the loud cymbals. Praise Him on the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.
Let's all sing it one more time. Praise Him on the trumpet, the psaltery and harp. Praise Him on the timbrel and the dance. Praise Him, stringed instruments too. Praise Him on the loud cymbals. Praise Him on the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. So please turn to the supplement. We'll try a new song, song number 3. Lord, I need you, oh, I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need thee. Oh, I need thee. Every hour I need thee. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need thee. Let's all join in the second verse. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need thee. Oh, I need thee. Every hour I need thee. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need thee. Okay, we'll sing another song, 258. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. We believe in His name. We have called on the name of Jesus. We are saved. We are saved at His name. The demons flee at His name. Captives are free. For there is no other name that is higher than Jesus. There is power in the name of Jesus.
Okay, lastly, we'll sing song number 4 from the supplement. Song number 4, Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 1,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Yes, we'll all stand and we'll sing this chorus, Spirit of the Living God, fall afresh on me, before Dr. Lily Daniel brings us God's word. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me, mold me, fill me.
Dear people, I प्यारे want लोगों, to talk to you about the cross and the blood of Jesus. आज सुबह प्रभु के क्रूस और प्रभु यीशु के लहू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। వాళ్ళారా మీతో సిలువల గురించి సిలువ రక్తముల గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. Christian faith is based on the cross. It revolves around the cross. मसीह विश्वास जो है वो क्रूस उसका केंद्र है। క్రైస్తవుల యొక్క విశ్వాసము సిలువ దగ్గర సిలువ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటది. From the days of Adam's fall, आदम के गिरने के दिन से लेकर God had to use blood to cover him. परमेश्वर को बार बार लहू का इस्तेमाल करना पड़ा कि आदम को बचा सके। కప్పడానికి రక్తాన్ని వాడుకోవాల్సి వచ్చింది. Genesis 3rd chapter, उत्पत्ति 3रा अध्याय కాండం 3వ అధ్యాయం 9th verse. और 9वां पद। And the Lord called unto Adam and said unto him, Where art thou? और परमेश्वर ने आदम को पूछा कि तू कहाँ है? యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। అందుకు అతడు నేను తోటలోని స్వరం విన్నప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటుంది కనుక భయపడి దాగుకుంటున్నాను. And he said, Who told you that you are naked? Hast thou eaten the tree whereof I commanded thee that thou shouldst not eat? उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष में से खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसी में से खाया है? అందుకు ఆయన నీవు దిగంబరు అని నీకు తెలిపిన వాడు ఎవడు, నీవు తినకూడదని నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలం తింటివా? See how Adam enjoyed the presence of God every day in the evenings. और हर रोज शाम को कैसे आदम परमेश्वर की संगति का आनंद लेता था। సాయంకాలము ఆదాము ఎలా దేవుని సన్నిధిని ఆనందిస్తూ ఉండేవాడు. But when he yielded to the devil लेकिन जब वो शैतान के आगे झुका సైతానుకు ఆయన లొంగిపోయినప్పుడు, and ate that fruit, और उस फल को खाया, తిన్నప్పుడు he realized he was naked. उसे एहसास हुआ कि वो नंगा है। ఆయన తను చూసుకున్నాడు. The devil came there to deceive Eve. शैतान वहां हव्वा को बहकाने के लिए आया। తాను అవ్వను మోసం చేయడానికి వచ్చింది. And how did he deceive Eve? और कैसे शैतान ने हव्वा को बहकाया? అవ్వను మోసగించింది. He said, Has God said like this? उसने सवाल पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच में ऐसा कहा है? To this day, the devil uses that same word to trick you and trick me. आज तक शैतान इसी सवाल का इस्तेमाल कर रहा है, आपको बहकाने में और मुझे बहकाने में। సైతాను అదే మాట మిమ్మల్ని నన్ను దారి తప్పించడానికి మోసగించడానికి వాడుతుంది. Has God said like that? क्या परमेश्वर ने सचमुच में ऐसा कहा है? That's how he gets into our lives. इस तरह से वो हमारी जिंदगी में कदम रखता है। మా జీవితాలను ప్రవేశిస్తాడు. And here Adam knew he was naked. आदम को मालूम था कि वो नंगा है। దిగంబరి అని ఎరిగినాడు. And what did he do? 7th verse. 7वां पद उसने क्या 7వ వచనం किया? ఏం చేశాడు? They sewed fig leaves together and made themselves apron. और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। But what did God do? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 21st verse. 21वां पद, 21వ వచనములో And unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहनाए। ఆదాముకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయలను చేయించి వారిని తొడిగించాడు. So an animal had to be killed, एक पशु की बलि चढ़ानी पड़ी and with that skin God clothed Adam. और उसकी खाल से परमेश्वर ने आदम को के नंगेपन को ढका। Then we come to the story of Abel and Cain. उसके बाद हाबिल और कैन की कहानी को हम देखते हैं। 4th chapter, 4th verse. 4वां अध्याय 4वां पद, 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం. Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and his offering. और हाबिल ने भी अपनी कुछ भेड़ बकरियों के पहलौठों में से कुछ को चर्बी सहित भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। కూడా తన మందలో తొలుచులు పుట్టిన వాటిలో పొరుగున వాటిని కొని తెచ్చును. యెహోవా ఏబేలును అతని అర్పణను లక్ష్యపెట్టాడు.
But unto Cain and to his offering he had not respect. लेकिन केन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। His Abel's offering, there was blood in it. हाबिल की भेंट में लहू था। హేబెలు యొక్క అర్పణలో రక్తం ఉండింది. Throughout history, God had to redeem man through blood. और सारे मानव इतिहास में परमेश्वर को, आदमी को, मानव को लहू के द्वारा बचाना पड़ा। అంతలోనూ దేవుడు మానవుని రక్తం ద్వారానే విమోచించవలసి వచ్చింది. So Cain got angry with Abel and killed him. और कैन हाबिल से नाराज हुआ और उसकी हत्या कर दी। హేబెలు మీద కోపగించి చంపేశాడు. And in Hebrews 11th chapter 4th verse it says, और इब्रानियों के 11वां अध्याय 4 पद में वचन ऐसा कहता है, ఫిబ్రవరి 11:4 ఏమంటదంటే the blood of Abel is speaking something else. हाबिल का लहू तो कुछ और कह रहा है। హేబెలు యొక్క రక్తం భూమిలో నుండి మాట్లాడుతున్నది అని. The 4th verse, 4 पद, వచనం. by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. विश्वासी से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, విశ్వాసమును బట్టి కయీను బలి కంటే హేబెలు ఉన్నతమైన బలిని అర్పించెను. by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई और परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है, फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు. Abel brought the blood, हाबिल बलि का लहू लाया, and when his blood was in the ground, it speaks better things for us. और जब वो लहू धरती पर था तो हमारे लिए बेहतर चीजें कहता है। భూమిలో ఉన్నప్పుడు అది మన కొరకు మేలైన విషయాన్ని మాట్లాడుతుంది. Then we come to the Passover. उसके बाद हम फसह के తర్వాత మనం समय पर आते हैं వస్తున్నాం. Exodus 12th chapter 21st verse. నిర్గమకాండ और निर्गमन 12वां अध्याय और 21वां पद, யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 22nd verse. 22ஆம் और 22वां पद, రెండో వచనం. And he shall take, I'll read 21st verse. Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. அப்பொழுது மோசே 22 निर्गमन 12वां अध्याय 22वां पद, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेना, उसे तसले में रखे हुए लहू में डुबोना और उसी तसले के लहू से कुछ दरवाजे की चौखट के ऊपर और दोनों अलंगों पर लगा देना, और भोर होने तक तुम And में he से shall कोई take अपने a घर के bunch दरवाजे से of बाहर न hyssop निकले। and dip it in the blood that is in the basin, strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out at the door of his house until the morning. ஈசோப்பு கொழுந்துகளினால் और उसी तसले में के लहू से कुछ दरवाजे की चौखट के ऊपर और दोनों अलंगों पर लगा देना, और भोर होने तक तुम में से कोई अपने घर के दरवाजे से बाहर न निकलना। வீட்டு வாசலை விட்டு புறப்பட வேண்டாம். మరియు ఇస్సోపు కొంచెం తీసుకొని పల్లెంలో ఉన్న రక్తంలో దాన్ని నుంచి ద్వారబంధపు పై కమ్మికి రెండు నీవు కమ్ములకు పల్లెంలో ఉన్న రక్తము తాకిపోవాలను. తరువాత మీలో ఎవరును ఉదయం వరకు తన ఇంటి ద్వారం నుండి బయలు వెళ్ళకూడదు. For the Lord will pass through tonight to smite the Egyptians, and when he seeth the blood upon the lintel and on the two side posts, Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in and into your house to smite you. கர்த்தர் எகிப்தியரை 23वां पद, क्योंकि यहोवा मिस्रियों को मारने के लिए निकलेगा, और जहां जहां वह दरवाजों की चौखट के ऊपर और दोनों अलंगों पर लहू को देखेगा, வரவட்டாமல் लगा हुआ देखेगा, वहां वहां यहोवा उस घर को छोड़कर आगे निकल जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए जाने न देगा। పై కమ్మి మీదను రెండు నీవు కమ్మి మీదన రక్తమును చూచి యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును, మిమ్మును హతం చేయుటకు మీ ఇళ్ళలోనికి సంహారకుడు చొరనియవడు. 26 and 27. 26 26 और 27, 7 వచనాలు. It shall come to pass when your children shall say unto you, what mean ye by this service? அப்பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள் और जब तुम्हारी संतान तुमसे पूछे कि इस विधि को मानने का क्या अर्थ है, ఆచారం ఏంటని మేము అడిగినప్పుడు Then ye shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians and delivered our houses, and the people bowed their head and worshipped.
இது கர்த்தருடைய तो तुम பஸ்காவாகிய பலி. तो तुम कहना அதன் பண்ணி 27वां पद, यह यहोवा के लिए फसह का बलिदान है, क्योंकि उसने मिस्र में इजरायलियों के घरों को छोड़कर मिस्रियों को नाश कर दिया, परंतु हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। మన ఇండ్లను కాచినప్పుడు ఆయన ఐగుప్తులోని ఇశ్రాయేలు ఇండ్లను విడిచిపెట్టెను ఆనవల్లని చెప్పారు. The angel of death passed over those houses where there was the blood of the lamb. मौत का दूत उन सभी घरों के ऊपर से निकल गया, अंदर नहीं घुसा, जहां पर मेमने का लहू दरवाजों की चौखट पर और अलंगों पर लगा हुआ था। మరణదూత దాటిపోయింది. And that same night, so many Egyptians, including the house of Pharaoh, the firstborn, died. அந்த उसी रात सारे मिस्र भर में, यहाँ तक कि फिरौन के घराने में भी उनके जेठे पहलौठे संतान मारी गई। రాత్రే ఫరో యొక్క ప్రథమ పుత్రుడు ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఏకుల యొక్క కుమారుడు చనిపోయారు. And the Egyptians said, "You get out from us." और मिस्री लोग बोले इजरायलियों को, अरे हमारे देश से निकल जाओ, निकल जाओ। వెళ్ళిపోండి అన్నారు. Blood is so important in the scriptures, just starting from Adam's story till the end, Revelation. आप देखेंगे आदम की कहानी में शुरू से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंत तक लहू का खास महत्व है। அவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்ததாக காணப்படுகின்றன. రక్తమారేటటువంటిది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఆదాము దగ్గర నుండి ప్రకటన వరకు కూడా. And Moses is telling, when your children ask you, then give them the explanation of this great deliverance. இந்த மகா और मूसा ने बताया कि जब तुम्हारे बच्चे सवाल पूछें कि एक पर्व क्यों है, तब तुम इस महान मुक्ति के बारे में उनको बताना। And throughout the Old Testament, there were so many sacrifices made. அந்த பழைய पुराने नियम में बाकी बहुत से बलिदान चढ़ाए जाते थे। ఎన్నో బలులు అర్పించారు. Then we come to the life of David. பிறகு நான் தாவீதுடைய ஜீவிதத்தை जब हम दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं, 2 Samuel 24th chapter, we can read about it. David sinned against God in numbering the people. और जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने इस बात में पाप किया कि उसने उसकी सेना And so के he was इस्राएलियों की given गिनती की, 3 punishments. दाऊद को 3 सजाओं का चुनाव दिया, 2 तीनों में से Samuel चुन लो। 24th chapter. 2 சாமுவேல் दूसरा शमूएल 24वां अध्याय। So he had to choose. ஆகையினாலே अब उसे दंड चुनना था। అందులో ఆయన ఏదో ఒకటి ఎన్నుకోవాల్సి వచ్చింది. So he said, I will fall into the hands of God. He is a merciful God, than into the hands of man. அவன் சொன்னான், वो बोला, मैं तो परमेश्वर के हाथ में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि वो तो दयावान परमेश्वर है। आदमी के हाथ में पढ़ने से बेहतर है मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ूं। So he chose the third punishment, that was the pestilence. பாருங்கள் அந்த வாதையை और उसने तीसरी सजा को चुना, जो महामारी थी, And the angel is destroying the people. அங்கே और स्वर्गदूत लोगों को मार रहा है। ప్రజలను నాశనం చేస్తూ ఉండినది. And David says, I have sinned. அங்கே தாவீது दाऊद बोला, मैंने ही पाप किया है। నేను పాపం చేసిన వాడు నేను. And the prophet said, go make a sacrifice to God. அப்பொழுது அந்த नबी बोला, जा प्रभु के लिए बलिदान चढ़ा। దేవునికి ఒక బలి అర్పించమన్నాడు. 24 and 25. 24 24वां और 25वां पद। 25 వచనం. And the king said unto Aruna, Nay, I will surely buy of thee at a price. Neither will I offer burnt offering unto the Lord my God with that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. ராஜா அர்னாவை பார்த்து, परंतु राजा ने अरोना से कहा, 24वां पद, नहीं, मैं तो दाम देकर ही इन्हें मोल लूंगा, வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவீது क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मैंने कुछ मूल्य न चुकाया हो। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को 50 शेकेल चांदी देकर मोल लिया। అర్పించని అరుణాను दूसरा शमूएल 24वां अध्याय। 50 తులములు వెండి కొనెను. 25th verse. David built there an altar unto the Lord, offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed. 25वां पद, तब दाऊद ने वहां पर यहोवा के लिए वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के लिए की गई विनती सुन ली। तब इज़राइल पर से महामारी दूर हो गई। నామమునకు బలిపీఠమును కట్టించి దాన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించును. యెహోవా దేశం కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపన ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశ్రాయేలు విడిచిపోయాను.
So there was deliverance because of the shedding of the blood. அங்கே ரத்தம் उस लहू के बलिदान से वहां पर मुक्ति आई। ఉంచడం వలన అక్కడ విడుదల ఉండింది. Then we come to Jesus, उसके बाद हम यीशु को देखते हैं, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాం. the greatest sacrifice for sins. पाप के लिए सर्वोच्च बलि, పాపముల కొరకై చేయబడిన మహా ఒక గొప్ప బలి. And because he died for us, there is hope for humanity. பாருங்கள் அவர் நமக்கு क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा, इसलिए आज मानवता के लिए आशा है। మన కొరకై మరణించాడు కాబట్టి మానవ కోటికి నిరీక్షణ ఉంది. John 12th chapter 32nd verse. யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனம். యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం. यूहन्ना 12वां अध्याय और 32वां पद। Jesus had to be crucified. ஆண்டவராகிய இயேசு यीशु को क्रूस पर मरना था। యేసు ప్రభు శిలువలో బలి అర్పించబడవలసి ఉన్నది. He had to pass through a certain kind of death. அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட उन्हें एक खास तरीके की मौत सहनी थी। ఒక ప్రత్యేకమైన మరణం ద్వారా వెళ్ళవలసి ఉంది. The 32nd verse. 32वां पद। 32వ వచనములో Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. 31वां और 32वां पद। अब इस संसार का न्याय होता है, यूहन्ना 12वां अध्याय। अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। నేను భూమి మీద నుండి పైకెత్తబడిన ఎడల అందరినీ నా యొద్దకు ఆకర్షించుకుందని చెప్పింది. If I am lifted up, that was the crucifixion, was the death through which Jesus had to pass. और जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, अर्थात कैसी मौत प्रभु यीशु मसीह मरेंगे वो यहाँ दिखाता है। సిలువ వేయబడవలసి ఉంది. A particular kind of death, एक खास तरीके से मरना, అనేక విధమైనటువంటి మరణం, lot of suffering. उसमें बहुत ఎంతో వేదన. कष्ट उठाना। God's will was performed correctly, even in the death of Jesus. प्रभु परमेश्वर की पवित्र इच्छा यहाँ तक कि प्रभु यीशु की मौत में भी उन्होंने सही तरह से पूरी की। దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన చిత్తము నెరవేరబడింది. Matthew 20th chapter 18th verse. मत्ती 20वां अध्याय और 18वां पद। సువార్త 20వ అధ్యాయము 18వ వచనం. And Matthew 20:18. మత్తయి 20:18. And behold, we go to Jerusalem, Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. मत्ती 20वां अध्याय और 18वां पद। देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। మనుష్య కుమారుడు ప్రధాన యాజకులకును శాస్త్రులకును అప్పగింపబడును, వారు ఆయన మరణ శిక్ష విధించి And shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him. The third day he shall rise again. 19वां पद। वे उसे गैर यहूदियों के हाथ में सौंपेंगे कि उसका उपहास करें, कोड़े मारें, उसे क्रूस पर चढ़ाएं और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। సిలువ వేయుటకును అన్యులకు ఆయన అప్పగింతురు, మూడవ దినమున ఆయన మరణ లేచును. He had to be crucified, that particular kind of death for us. उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो खास तरीके से जो उन्हें मरना होगा हमारे लिए। అలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి మరణమును ఆయన మరణించవలసి వచ్చింది. Pilate says to the Jews, पिलातुस यहूदियों को you कहता है, go and crucify him. You do what you want. You pass judgment on him. और उन्होंने पिलातुस बोला तुम लोग इसको दंड दो, जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम ही लोग दंड दो। మీరు ఆయన తీర్పు తీర్చండి, మీరే ఆయన మరణ శిక్ష విధించండి అంటున్నారు. Pilate says, Jews says, no, we have no right to kill him. यहूदी बोले नहीं नहीं, हमें हक नहीं है कि हम इसको मारें। అంటున్నారు ఆయన చంపడానికి మాకు అధికారం లేదు. So he had to be crucified according to the Roman ways. इसीलिए रोमियों के तरीके से उन्हें क्रूस पर मरना पड़ा। రోమా పద్ధతి ప్రకారంగా సిలువ వేయబడవలసి వచ్చింది. And in Matthew 26:28, मत्ती 26वां अध्याय और 28वां पद। 26, it speaks about the shedding of the blood. और वो अपने लहू के बहाने के विषय में कहता है, అక్కడ చెప్పబడుతున్నది. This is my blood of the New Testament, which is shed for the many for the remission of sins. मत्ती 26वां अध्याय और 28वां पद।
क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। అనేకుల కొరకు సిద్ధపడుతున్న నిబంధన రక్తము. And Jesus said, do this communion service in remembrance of me. प्रभु ने बोला इस भोज में मेरी यादगार में भाग लिया करो। காரியங்களை என்னுடைய நினைவு கூறுதலாக இதை செய்யுங்கள் என்றார். నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీన్ని చేయండి అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు. There is great blessing in the communion service. பாருங்கள் அந்த और इस भोज में भाग लेना बहुत आशीष की बात है। రాత్రి భోజనంలో ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదం. Don't take it in a routine way. அதை इसको एक रीति रिवाज की तरह से हल्की बात मान के इसमें भाग मत लो। Search your heart that there is no sin in your hearts. உங்களுடைய இதய भाग लेने से पहले अपने मन को जांचो कि मन में कोई छिपा पाप तो नहीं है। పరిశోధించుకొని మీ హృదయంలో పాపం లేకుండా చూసుకోనండి. And take part in the communion service, which is a great blessing for us. பாருங்கள் इसका इस भोज में भाग लो। इसकी आराधना में इससे बड़ी आशीष आती है। పాలు పొందరాలి మనకు ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదం. And it is for us to remember the death of Jesus. அது ஆண்டவர் और ये इस बात के लिए कि हम यीशु की मौत को याद करें, ये जरूरी है। చేసుకోవడం. I hope in all our centers we have communion service at least once a month. மாதத்துக்கு ஒரு मुझे आशा है कि हमारे सभी प्रार्थना केंद्रों में कम से कम महीने में एक बार जरूर నెలకొకసారి ये प्रभु के भोज में भाग लिया जाता है। You can have it in the Saturday fasting and prayer time. நீங்கள் आप शनिवार की उपवास प्रार्थना के समय में इसको रख सकते हो, ఉపవాస ప్రార్థన సమయంలో మీరు దాన్ని చేయవచ్చు. Because all unconverted people will not be there. அப்பொழுது क्योंकि गैर मन फिराए लोग वहां पर नहीं होंगे। అంటే మారు మనసు పొందని వారు అప్పుడు అక్కడ ఉండరు. There is great power through the blood of the cross. அங்கே சிலுவை और क्रूस के उस लहू में வல்லமை बहुत ताकत है। ద్వారా గొప్ప శక్తి ఉన్నది. There are great blessings for each one of us to inherit. நாம் ஒவ்வொரு हमारे सबके लिए बहुत बड़ी आशीष विरासत में पाने के लिए इंतजार में है। When you see in the internet big job somewhere, then you apply and go there. इंटरनेट में कोई बड़ी नौकरी आप देखते हो, उसका विज्ञापन आप वहां पर अप्लाई कर देते हो, अर्जी देते हो। We are missing out on the blessing of the death and the resurrection of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के मौत और पुनरुत्थान की आशीष को खो रहे हैं। పునరుద్ధాన దీవెన మనం కోల్పోతున్నాం. In America, Good Friday is a working day. பாருங்கள் அமெரிக்காவிலே अमेरिका में जो उत्तम शुक्रवार है वो काम का दिन है, छुट्टी नहीं होती उस दिन। అమెరికాలో మంచి శుక్రవారము పనిచేసే దినం అక్కడ. It is not a national holiday. அது वहां पर ये राष्ट्रीय దేశమంతటికి సెలవు. छुट्टी का दिन नहीं है। So, remembering the death of Christ, communion service they will have in churches, but deeply remembering the death of Christ is not there. பாருங்கள் और कम्युनियन आराधना होती है, लेकिन प्रभु यीशु की मौत को सच्चे मन से, मन की गहराई से याद करना ऐसा वहां पर नहीं होता। ఆ చర్చ ఆలయాల్లో ఆ కార్యాలు చేస్తారు కానీ యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని లోతుగా గ్రహించుకునే విధానంగా వాళ్ళు చేయరు. But here in the fellowship, ஆனால் இங்கே நம்முடைய சகோதரர் यहाँ फेलोशिप में Senior Mr. Daniel used to say in his church, அங்கே மூத்த स्वर्गीय भाई श्री in his वरिष्ठ भाई father's वानदेव जी days, அவருடைய அப்பாவின் अपने कलीसिया में अपने जवानी के दिनों में कहा करते थे, there would be no deaths among the people அங்கே और लोगों में मौत नहीं होती थी, लोगों के बीच में मौत नहीं आती थी, because they preached the cross. क्योंकि वो क्रूस पर प्रचार करते थे। ఎందుకంటే సిలువ వారికి బోధించబడడం వల్ల. That is a great blessing. அது மகா பெரிய बहुत बड़ी आशीष है। I have seen many devils cast out through the blood of the Lamb. அங்கே और मैंने बहुत से दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के लहू की ताकत से ஆண்டதை நான் கண்டேன். भगाते हुए निकालते हुए देखा है। అనేకమైన దయ్యాలను పారద్రోలడం నేను చూశాను. My mother used to say, मेरी माँ कहा करती थी, మా అమ్మ అనేది when there was smallpox in the village, जब गांव में चेचक फैल गया వాళ్ళ గ్రామాల్లో స్మాల్ పాక్స్ వచ్చినప్పుడు it will stop where the Christians are. जहाँ ईसाई लोग रहते थे वहां पर चेचक रुक जाता था। అది ఆగిపోయేదట. There's a difference between those who are under the blood and not and outside the blood. பாருங்கள் जो लोग यीशु के लहू के तले हैं और जो उस लहू के बाहर हैं, दोनों में फर्क रहता है। இல்லாதவர்களுக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை காண்பிக்கும்படியாக ప్రభు యొక్క రక్తం కింద ఉన్న వారికి ఆ రక్తం కింద లేని వారికి మధ్య వ్యత్యాసం. How much are you enjoying the privilege of the blood of Christ in your life? உங்களுடைய अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु के लहू की कितनी आशीष को आप अनुभव कर रहे हो। జీవితంలో యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం యొక్క ప్రభావం
ప్రభావం ఆశీర్వాదాన్ని ఎంతవరకు అనుభవిస్తున్నారు? Once when the children were small, I was in Kunnur. एक समय जब बच्चे छोटे थे तो मैं कुन्नूर में थी। పిల్లలు చిన్నవాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు నేను కున్నూరులో ఉండేదాన్ని. One of the boys had fever. एक बेटे को बुखार हो गया, ఒక ఆయనకి జ్వరం వచ్చింది. I could give him medicines that I could give. जो दवा दे सकती थी वो दी उसको, మందు ఇచ్చాను. It was not coming down. बुखार उतर नहीं रहा था। జ్వరం తగ్గడం లేదు. There was a chance to go to the another hill station to a missionary hospital. सिर्फ एक बचा था कि दूसरे पहाड़ी पर जाओ जहाँ पर एक मिशन अस्पताल था। హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని అక్కడ తలుపు And Joe was busy during that Good Friday, very busy in preaching the word somewhere. और भाई जो कहीं पर गुड फ्राइडे पर उत्तम शुक्रवार पर प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए व्यस्त थे। గారు ఎక్కడో ప్రసంగించడంలో చాలా ముమ్మరంగా ఉండినారు. I had to make a decision मुझे निर्णय लेना पड़ा తీర్మానం చేయవలసి వచ్చింది. whether I will go to that hospital. कि उस अस्पताल में बेटे को लेकर जाऊं। I went to the Lord. मैं प्रभु के पास गई। The Lord said, प्रभु ने कहा, the God of peace shall bruise Satan shortly under your feet. शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान के सिर को तुम्हारे पैरों के तले कुचल देगा। దాన్ని కాళ్ళ కింద అణగదొక్కుతాడు అని. And the temperature touched normal. एकदम बुखार उतर गया और सामान्य हो गया। Next morning, I went to the post office and gave telegram to Joe, the child is well. और अगली सुबह मैं डाकखाने गई और वहां से टेलीग्राम भेजा भाई जो के पास कि बच्चा अब सही ठीक है, बुखार उतर Are गया। you bruising Satan's head with the blood of the lamb? क्या परमेश्वर के मेमने यीशु के लहू के द्वारा शैतान के सिर को तुम आज कुचल रहे हो? దాని యొక్క తలను మీరు నలపడుతున్నారా? In my own life as a teenager, अपने किशोरावस्था में, अपनी जिंदगी में, యవన స్త్రీగా నా సొంత జీవితంలో as I sat under the preaching of late Mr. Daniel, स्वर्गीय भाई दानियल जी के प्रचार के तले जब मैं बैठी, దానియేలు గారి యొక్క ప్రసంగం క్రింద నేను కూర్చుని ఉన్నప్పుడు he said there is sufficient power in the blood of Christ to make you live a holy life in the days of your youth. उन्होंने कहा कि तुम्हारी जवानी के दिनों में प्रभु यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि तुम्हें पवित्र जीवन जीने के लिए दे सकते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా పరిశుద్ధంగా జీవించేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి సహాయం దొరుకుతుంది. And he said how he got victory in his life. उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में पाप के ऊपर विजय पाई। జయం పొందారు. So I went to God. मैं परमेश्वर के पास गई। I said, Lord, you gave him the victory over his inner nature, sanctified him. Give me that blessing. मैंने प्रभु कहा, प्रभु आपने इनको तो इनके पापी स्वभाव के ऊपर विजय दी और इन्हें पवित्र जीवन दिया, मुझे भी वही विजय चाहिए। ఆ జీవితంలో అంతరంగంలో ఆ పరిశుద్ధత నాకు ఇచ్చావు, నాకును అనుగ్రహించమన్నాను. The privilege of the cross and the blood. और ये खास अधिकार जो क्रूस और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें मिलता है। And so God delivered me. और परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी। I went to do medicine with so many temptations there. और मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए गई, वहां पर बहुत सी परीक्षाएं थी। చదవడానికి వెళ్ళాను, అక్కడ ఎన్నో శోధనలు. But I would feel like a bird flying up in the air. लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं तो उस आजाद पंछी की तरह से हूँ जो ऊपर उड़ता है। There are great privileges for you and for me. और ये खास अधिकार आपके लिए और मेरे लिए हैं। ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి. The cross and the shedding of Jesus' blood. वो क्रूस और प्रभु यीशु का जो लहू उन्होंने हमारे लिए बहाया। చిందించిన రక్తం ద్వారా And the greatest blessing is salvation. और सबसे बड़ी आशीष उद्धार है, हमारी आत्मा का उद्धार। I love the 3rd chapter of John very much. यूहन्ना का 3रा अध्याय मुझे बहुत पसंद है। 3వ అధ్యాయాన్ని నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తాను. This was the beginning of Jesus' ministry. ये प्रभु यीशु की सेवा की शुरुआत थी। సేవ ఆరంభం. So many years after only Jesus is going to die. बहुत साल बाद ही प्रभु यीशु मरने वाले थे। సంవత్సరాల తర్వాతే యేసు ప్రభు మరణించిన ఉన్నాడు. No. In the beginning, he brings the cross. नहीं, वो शुरू में ही उन्होंने क्रूस के बारे में बताया। జీవం చేస్తున్నాడు. He is telling Nicodemus, you must be born again. वो निकोदेमुस से कह रहे थे, निकोदेमुस तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, You must be born of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा से तुझे जन्म लेना होगा। ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించాలి. That is the beginning of Christianity in your life. मसीह जीवन की शुरुआत वहां से ही होती है। క్రైస్తవ జీవితం యొక్క
ఆరంభం. Brother Arthur was telling us about that this morning. भाई आर्थर आज सुबह इसी बारे में हमें बता रहे थे। ఆర్థర్ గారు అది మనకు చెప్తూ ఉంటున్నారు. We must be born again. நீங்கள் மறுபடியும் तुम பிறக்க வேண்டும். आत्मा में जन्म लो। We are all born in the flesh. हम सब शरीर में जन्मे हैं, మనందరం పుట్టాము. But are we born in the spirit? क्या हम पवित्र आत्मा में जन्मे हैं? What is born in the flesh is flesh. जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, జన్మించిన శరీరం. What is born in the spirit is spirit. और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। So how do you get this born again experience? तुम इस उद्धार के अनुभव को कैसे पाते हो? జన్మ ఎలాగా అనుభవం సంపాదించుకుంటావు. Third chapter of John, 14th verse. यूहन्ना तीसरा अध्याय और 14वां पद। यूहन्ना Jesus is 3:14। speaking about the poison in human heart. प्रभु यीशु मसीह आदमी के मन में जो जहर बसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, యేసు ప్రభు మానవ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And the solution for it. அதற்கான और उसका इलाज बता रहे हैं। పురుగుడు As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. சர்ப்பமானது और மோசையினால் வனாந்தரத்திலே तीसरा अध्याय 14वां पद। குமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए। ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్టు మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. So whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. कि जो कोई उस पर विश्वास करे நித்திய ஜீவனை वो नाश न हो बल्कि उसमें अनंत जीवन पाए। The cross gives you eternal life. क्रूस तुम्हें सनातन जीवन देता है, अमरता का As जीवन। Brother Arthur was saying, we are, each one of us, our souls are going to live ever and ever and ever and ever. भाई आर्थर हमें याद करवा रहे थे कि हमारी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, वो अमर है। చెప్తున్నట్లు మన ఆత్మలు ఎన్నటెన్నటికి జీవింపనై ఉన్నాయి. But Jesus came to give us eternal life. लेकिन प्रभु यीशु तो हमें अमरता में जीवन देने के लिए आए हैं। మనకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. But we have to realize the poison in our nature. लेकिन उससे पहले हमारे स्वभाव में जो जहर भरा हुआ है उसको समझना बड़ा जरूरी है। And accept that there is evil in our heart and in our nature. इस बात को हमें कबूल करें कि हमारी अपने स्वभाव में बुराई और पाप भरा है, మన యొక్క జీవితంలో చెడుకున్నదని అంగీకరించాలి. And there is remedy in the blood of Christ. கிறிஸ்து இயேசுவின் यीशु के लहू में हमारे इस पाप के इस जहर के लिए इलाज है। There is victory over sin. பாவத்தின் மேலே வெற்றி पाप के ऊपर जीत है। ఉన్నది. You can get complete victory and sanctification through the blood of Christ. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप पूरी पवित्रता पा सकते हो। பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా పరిపూర్ణమైన జయము పరిశుద్ధతను పొందవచ్చు. Christian life starts with the cross. பாருங்கள் கிறிஸ்து मसीह जीवन क्रूस से आरंभ होता है, జీవితం సిలువతో ఆరంభమవుతుంది. Without that, you are not a Christian. அது இல்லாதபடி उसके बिना आप सच्चे ईसाई नहीं हो। నీవు క్రైస్తవుడు కావు. The poison in us must be accepted and removed. విషయమానది ನಮ್ಮ जो जहर हमारे स्वभाव में उसको हमें कबूल करके बाहर निकालना है। అంగీకరించి తీసేసుకోవాలి. We turn to Romans 8th chapter 9th verse. ரோமர் 8 रोमियो 8वां अध्याय और 9वां पद। 8-9 వచనంలో If you are not born of God's Spirit, you are none of His. अगर तुम में यीशु का आत्मा नहीं है तो तुम उसके नहीं हो। ఆత్మ లేని వారైతే మీరు ఆయన చెందినటువంటి వారు కారు. And in 12th verse and to the 14th verse, और 12 से 14वां पद रोमियो 8वां अध्याय बताता है it is to be led by the Spirit of God. कि तुम परमेश्वर के आत्मा से चलो। చేత నడిపింపబడ్డావు. Let us read those verses. Romans 8-9, these are important verses. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, इन पर निशान लगाओ और इनको ध्यान करो। ప్రాముఖ్యమైన మనం చదువుకుందాం. Mr. Daniel used to emphasize Romans 6th chapter, 7th chapter and 8th chapter very much. காலம் சென்ற தானியேல் स्वर्गीय भाई दानियल जी रोमियो के 6, 7 और 8वें अध्याय पर खास जोर दिया करते थे। రోమ 6, 7, 8 అధ్యాయాలు ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పేవారు. 9th verse of 8th chapter says, 9वां पद कहता है रोमियो का 8वां अध्याय, 9వ వచనంలో Ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। ఆత్మ స్వభావం గలవారే కాదు.
శరీర స్వభావం గలవారు కారు. ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు. Only when you're born again, the Spirit of God comes into you. नए सिरे से जन्मने के बाद ही परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आता है. జన్మించినప్పుడే క్రీస్తు ఆత్మ మీలోకి వస్తది. There comes a great radical change into your life. आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है. మీలో ఒక గొప్ప మార్పు ఏర్పడుతుంది. We still live in this world, हम इसी दुनिया में जीते हैं, but we will walk in the Spirit. लेकिन हम पवित्र आत्मा में चलते हैं. It is completely different Christian life. वो मसीह जीवन बिल्कुल अलग तरह का है. నిత్యాసమైన క్రైస్తవ జీవితం 12th verse. 12वां पद. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. इसलिए है भाइयों, हम शरीर के ऋणी नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन जिए. కాబట్టి సహోదరులారా శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించుట మన శరీరమున రుణస్థులము కాము. For if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள். क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हो तो तुम मर जाओगे, परंतु यदि आत्मा के अनुसार के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे. అట్లా జీవించెదరు. 14th verse. 14वां पद. Many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं. దేవుని కుమారులై ఉందరు. Then, when you follow the cross like that, जब इस तरह से क्रूस के पीछे आप चलते हो, సిలువను వెంబడిస్తున్న there is the reproach of the cross. அங்கே சிலுவையினுடைய நிந்தை உண்டு. సిలువ యొక్క నిందలు వస్తాయి. There is a price to pay. जब क्रूस उठाते हो तो उसकी దాని వరకు మనం విలువ निंदा तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम्हें Hebrews उसका 11 दाम चुकाना chapter होगा. 26th verse. 12वां अध्याय और 26वां पद. 11:20 रोमियो 12वां अध्याय 26वां पद. Here it says about Moses, यहाँ मूसा के विषय में वचन बताता है. ఇక్కడ చెప్పబడింది. esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. இனி வரும் इब्रानियों 11वां अध्याय और 26वां पद कहता है कि मूसा ने मसीह के क्रूस की यातना और दुख को मिस्र When के you are धन born दौलत से again, ज्यादा you become समझा. like that. जब आप आत्मा में जन्म पाते हैं, सच्चाई में आप ऐसा महसूस You love करेंगे, the cross, आप क्रूस से प्रेम करेंगे and you are willing to bear the reproach of the cross in your life. और तुम क्रूस की निंदा को अपनी जिंदगी में सहने के लिए तैयार होगे. వచ్చే నిందను అనుభవిస్తారు. Carry the cross when you are young, and the cross will carry you when you are old. நீங்கள் வாலிபத்தில் இருக்கும்போது अपने जवानी में क्रूस को उठाओ और तुम्हारे बुढ़ापे में क्रूस तुम्हें उठाएगा. ఉన్నప్పుడు సిలువను పోయి మీరు వృద్ధులైనప్పుడు సిలువ మిమ్మల్ని మోస్తుంది. There is a brother here, 92 years old. यहाँ पर एक भाई है जो 92 साल का है. 92 సంవత్సరాలు ఉన్న ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ. He knew senior Mr. Daniel. वो स्वर्गीय भाई दानियल जी को जानते थे. కలిగినటువంటి ఆయన. This Christian life is a continuous life, not today, tomorrow, forever till you close your eyes on earth. और मसीह जीवन एक दो दिन का नहीं है. जब तक धरती पर आंखें बंद करोगे तब तक ये मसीह जीवन तुम्हारे अंदर चलता रहेगा. ఉండేటటువంటి జీవితంగా ఉంటుంది. How many of you know senior Mr. Daniel? Would you please stand up? आप में से कितनों ने स्वर्गीय भाई दानियल जी को, वरिष्ठ भाई दानियल जी को देखा है, उनसे मिले या उन्हें देखा है? జరిగిన వారు దయచేసి आप खड़े होइए. Those who knew senior Mr. Daniel, जो स्वर्गीय वरिष्ठ भाई दानियल जी को जानते I थे, see so few. कितने कम हैं. కొద్దిమందే ఉన్నారు. See, this blessing goes from generation to generation. देखो ये आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती है. ఆశీర్వాదం తరతరాలకి వెళ్తుంది. That's what Moses did at the Passover. यही बात मूसा ने फसह के समय में की. మోషే చేసిందే అది. The cross makes you to follow the Lord till the end of your life. क्रूस तुम्हें प्रभु के पीछे जिंदगी के अंत तक चलाता है. సిలువ నీ జీవితాంతం వరకు ప్రభువును వెంబడించేటట్టు చేస్తుంది. It is a continuing following, அது தொடர்ச்சியாக பின்பற்ற लगातार प्रभु के पीछे चलते रहना है. and it follows from generation to generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रूस के पीछे चलते रहना है. Jesus spoke of it in Matthew 16th chapter. प्रभु यीशु ने मत्ती के 16वें अध्याय में इसके विषय में बात की. వారు దాని విషయమై మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో మాట్లాడినారు. And here ఇక్కడ Jesus says, यीशु ने कहा 24th verse, 24वां पद, 4వ
వచ్చింది 16वां अध्याय If मत्ती की any पुस्तक। man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपने क्रूस को उठाए, अपने स्वार्थ का त्याग करे और मेरे पीछे हो ले। తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువను 24वां पद, Whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake shall find it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ప్రాణమును పోగొట్టుకున్నవాడు దాన్ని దక్కించుకుని These are all spiritual principles that once you come to the cross and you are converted, you have to follow it to the end of your days. और ये वो सिद्धांत हैं, मसीह आत्मिक सिद्धांत। जब तुम मन फिराते हो, क्रूस के पास आते हो, जिंदगी भर तुम इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जियोगे। వచ్చి రక్షింపబడినప్పుడు మీ జీవితంలో మీరు అనుసరించవలసినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సూత్రములు ఇవి. Then Philippians 3rd chapter. फिलिपियों का तीसरा अध्याय। అధ్యాయంలో Here we have Paul was in Rome. संत पौलुस उस समय रोम में थे। He was towards the end of his life. वो अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में थे। అంతములో ఆయన ఉండినాడు. See how he is thinking, how he is living. देखिए वो कैसे सोच रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। వస్తున్నాడు, ఎలా జీవిస్తున్నాడో చూడండి. 8th verse. 8वां पद, तीसरा अध्याय फिलिपियों की Yea, पुस्तक। doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. 8वां पद, इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त And be करूँ। found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. 9वां पद, और मैं मसीह में पाया जाऊं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से वो पैदा होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించి నీతి కలవాడిని ఆయన యందు ఆగపడి ఉంటుంది. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. 10वां पद, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ఆయన పునరుద్ధానం ఎరుగు నిమిత్తం ఆయన శ్రమలో పాలువాడు ఉన్నట్టు ఇట్టుదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకుని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాడు. 12th verse. 12वां पद, Paul did not think that he is finished. I am finished. I have finished my race. My Christian life is finished. He didn't think like that. संत पौलुस ने ये नहीं सोचा अब तो बहुत दिन जी लिए हो, मेरा सब जो काम था खत्म हो गया। ముగిసిందని అనలేదు. उन्होंने ऐसे Not बात as नहीं though सोची। I had already attained. Neither were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend for that which was I am apprehended of Jesus Christ. यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। నేను ఇంతవరకు సంపూర్ణ సిద్ధి పొందింది నేను అనుకోలేదు, కానీ నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు చేత పట్టుబడుతున్నాను దానిని పట్టుకోనవల్లని పరిగెత్తుచున్నాను. 14th verse. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 14वां पद, लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में But ऊपर he बुलाया had है। some sadness in his heart. उनके मन में लेकिन एक बात को लेकर कुछ दुख था। 17th verse. 17वां पद, Brethren, be followers together of me, mark them which walk as ye have us for an example. 17वां पद, भाइयों तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो। గురిపెట్టి చూడండి, నడుచుకొనని వారిని గురిపెట్టి చూడండి. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, they are the enemies of the cross of Christ. 18वां पद, क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूँ
और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। దీని గురించి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు ఏడ్చుతూ చెప్తున్నాను. So you can start as a disciple of Jesus आप शुरुआत तो प्रभु के चेले बनकर कर सकते हो, యేసు ప్రభు శిష్యుడిగా మీరు ఆరంభించవచ్చు. and if you don't keep running in the race in the right path, अगर अपने सही रास्ते पर दौड़ते नहीं रहे సరైన దారిలోనే పరిగెత్తకపోతే you can become the enemies of the cross. तुम क्रूस के दुश्मन भी बन सकते हो। శత్రువులుగా మారతారు. He is telling them, I am weeping and telling you, they are walking as the enemies of the cross. संत पौलुस कहते हैं मैं रो रो कर तुम्हें बता रहा हूं कि वो लोग तो क्रूस के दुश्मन की तरह जी रहे हैं। చెప్తున్నాను, నేను దుఃఖంతో ఏడ్చుతూ చెప్తున్నాను. 19th verse. 19वां पद, These are the signs of those who are enemies of the cross, जो क्रूस के दुश्मन हैं उनके ये चिन्ह हैं, ఉండేవి గుర్తులు ఇవి. whose end is destruction, उनका अंत विनाश है, వారి అంతం. whose God is their belly, उनका परमेश्वर पेट है, and whose glory is in their shame, अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं, దర్శపడుతున్నారు. who mind earthly things. सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। వాటి అందే మనసు. See, we can start well, நாம் நன்றாக ஆரம்பிக்கலாம். देखिए हम शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, but are we going to end well ஆனால் நாம் நன்றாக लेकिन क्या हमारा अंत and not भला become होगा? enemies of the cross? और अंत में कहीं हम क्रूस के दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे? శత్రువులు కాకుండా See what the Bible warns us about. பாருங்கள் வேதம் देखिए बाइबल हमें कैसी चेतावनी देता है, మనల్ని ఏ విధంగా హెచ్చరిస్తుందో. Who mind earthly things. जो सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं। ఘనమైన వాటినే వారు మనసులు. See, if you don't walk in the Spirit, நீங்கள் ஆவியின் अगर तुम आत्मा में नहीं चलते you रहोगे will start minding earthly things. तब इस संसार की चीजों पर तुम्हारा मन लग जाएगा। Senior Mr. Daniel used to tell a secret. காலம் சென்ற தானியேல் स्वर्गीय भाई वरिष्ठ दानियल जी हमें एक रहस्य बताते थे। उन्होंने कहा Those families in the fellowship சகவாசத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் फेलोशिप में वो परिवार who make it a point to come to every May retreat जो हर मई रिट्रीट में आने का निश्चित रखते हैं, తప్పకుండా మేము ఇంటికి వచ్చి రావడానికి తీర్మానించేవారు. will steadily the whole family progresses. पूरा का पूरा परिवार आगे बढ़ता जाएगा। అంతా స్థిరంగా వాళ్ళు అలా ముందుకు సాగుతారు. We all have to live in this world. हम सबको इस दुनिया में जीना है। ఈ లోకంలో మనం బ్రతకాలి. The Bible tells us we have to put food on the table, otherwise you are irresponsible. बाइबल बताता है कि हमको कमा के अपने बच्चों अपने परिवार के सामने भोजन रखना है, नहीं तो हम गैर जिम्मेदार हैं। We have to bring up families. हमें अपने परिवार को का पालन पोषण करना है। And here we have the answer, उसका जवाब यहाँ पर है, the cross. क्रूस। And be careful with your children. अपने बच्चों का ध्यान रखो। జాగ్రత్తగా When they have to go through the way of the cross, parents should not stop them. जब बच्चों को क्रूस के रास्ते से गुजरना पड़े तो माँ बाप को उन्हें रोक नहीं देना चाहिए। శత్రువులు తల్లిదండ్రులు వారిని ఆపు చేయకూడదు. They would have passed through the way of the cross, माँ बाप तो खुद उस क्रूस के मार्ग से गुजरे, మార్గంలో వెళ్ళి ఉంటారు. but when it comes to the children, they will pity them. लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो उन पर अपने मन से दया करना शुरू कर देते हैं। పరితాపం చెందుతారు. They are not a blessing to their children. वो अपने बच्चों के लिए आशीष नहीं है। వారు ఆశీర్వాదకరంగా లేదు. They must speak words of faith அவர்கள் விசுவாச और उन्हें विश्वास के वचन बोलो to continue in the way of the cross. ताकि बच्चे भी क्रूस के मार्ग में चलते रहें। సాగడానికి Then this fellowship will be a blessing. तभी ये फेलोशिप एक आशीष बनेगी। సహవాసం ఆశీర్వాదకరం. The devil is deceiving the whole world. शैतान सारी दुनिया को बहका रहा है। వాళ్ళని సైతాను మోసగిస్తున్నాడు. Has God said? क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा है? What? God said only a man and a woman must marry? क्या परमेश्वर ऐसा बोला है कि सिर्फ आदमी और औरत ही शादी करेंगे? ఈ పురుషులే పెళ్లి చేసుకోవాలని దేవుడు చెప్పాడా? No, no, no. You are also made differently. अरे तुम तो अलग ही बनाए अलग गए हो, ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడ్డాడు. So you can do what you like. इसलिए जो तुम्हारे मन में आए करो। కూడా అలా చేయొచ్చు. Great chaos is going to overtake the world. सारी दुनिया को बहुत भयंकर गड़बड़ी इसके ऊपर आएगी। ఉన్నది. And some of your children और तो कई होंगे तुम्हारे बच्चे are living in other countries. जो दूसरे देशों में जी रहे हैं, They have forgotten all that they learnt here. जो यहाँ सीखा था वो सब भूल चुके हैं। అవన్నీ మర్చిపోయారు. We have a Saturday prayer group in America. अमेरिका में शनिवार का उपवास प्रार्थना का समूह है। శనివారం ఉపవాస
a conference prayer group, because we are all scattered. You make yourself available for that 1.5 hours and join in the prayer group. और वो फोन पे प्रार्थना करते हैं क्योंकि सब लोग अलग अलग जगहों पर हैं। वो 1.5 घंटा उसके लिए निकालो। గంటన్నర సేపు ఆ కాన్ఫరెన్స్ ప్రార్థన ఉంటుంది, దాంట్లో మీరు చేరాలి. And one brother who was in the fellowship before was asked to join. एक भाई जो पहले फेलोशिप में था, जब उसको उसमें भाग लेने के लिए कहा गया प्रार्थना में, సావాసం ఉన్న సహోదరుని చేరబట్టి Do you know what his answer was? अब जानते उसने क्या जवाब दिया? Do you follow Saturday fasting, fellowship Saturday fasting and prayer in America? अरे तुम फेलोशिप को शनिवार का उपवास प्रार्थना जो भारत में करते थे, अमेरिका में भी करते हो क्या? శనివారం ఉపవాస ప్రార్థన అమెరికాలో కూడా మీరు Do you see how they can lose their faith in prayer, faith in God, and faith in the word of God? देखिए किस तरह से वो परमेश्वर में, उसके वचन में और प्रार्थना में विश्वास को खो बैठते हैं దేవుని ప్రార్థన యందు దేవుని వాక్యం యందు విశ్వాసాన్ని ఎలా కోల్పోతున్నారు? And become slaves of the world. और दुनिया के गुलाम बन जाते हैं। బానిసలైపోతున్నారు. So your children, be very careful with your children. अपने बच्चों के लिए बड़े सावधान रहो। పిల్లల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండండి. Don't think they are earning big money ऐसा मत सोचो वो मोटी तनख्वाह कमाते हैं డబ్బు సంపాదించినారు అనుకోవద్దు. and you get their money and it multiplies into rupees. और जब तुम उनका पैसा तुम्हें मिलता है तो तुम्हारे रुपए में बहुत ज्यादा बढ़त And होती you है want to build houses for them here. और उनके लिए तुम यहाँ पर घर बनाना चाहते हो। ఇల్లు కట్టాలనుకుంటారు మీరు. Be careful, don't go against the Bible. ध्यान रहे बाइबल के विरोध में मत जाओ। జాగ్రత్తగా ఉండండి, బైబిల్కి విరోధంగా వెళ్ళవద్దు. One senior brother from here एक वरिष्ठ is भाई in जो one यहाँ of those states, in the one of those states he is living with his children. और उसके कुछ राज्यों में वहां पर अपने बच्चों के साथ रह रहा है। పెద్ద సహోదరుడు ఆయన పిల్లలతో అక్కడ ఒక రాష్ట్రంలో ఉంటున్నాడు. And he said, can John come and have revival meeting in my church? उन्होंने कहा क्या जॉन वहां आकर हमारी चर्च में रिवाइवल की सभाएं कर सकते हैं क्या? జరిపిస్తారా అన్నాడు. I asked him, do you get your copies of Christ is Victor here? मैंने उनको पूछा क्या तुम्हें यहाँ पर क्राइसिस विक्टर मिलती है क्या? మీకు క్రైస్ట్ విక్టర్ వస్తుందా అని అడిగాను. No. बोला नहीं। And he wants John to go and have revival meetings there. और वो चाहते हैं जॉन वहां जाकर जागृति सभाएं करें, आत्मिक The जागृति Lord सभा। Spirit, let me tell him the truth. प्रभु के आत्मा ने मेरे मुंह से सच्चाई उसको कहलवाई। ఆయన సత్యం చెప్పమని నడిపించింది. You are losing your children and you yourself are sitting there losing your soul in America. मैंने कहा तुम अपने बच्चों को गंवा रहे हो और खुद यहाँ अमेरिका में आकर बैठे हो, तुम भी अपने आप को गंवा रहे हो। అక్కడ కూర్చుని మీ జీవితాలు కూడా పోగొట్టుకుంటారు. I was very concerned and I was praying for him. मुझे उनका बड़ा ध्यान था, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। ఆయన కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాను. Next day he called me. अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया। నన్ను పిలిచాడు. I couldn't forget what you told me. कल जो आपने कहा मैं उसे भुला नहीं पाया। మర్చిపోలేను. One of my children is in England. मेरे बच्चों में से एक इंग्लैंड में है, మా అబ్బాయి ఒక ఆయన ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నాడు. He married there. वहाँ शादी कर ली है వివాహం చేసుకున్నాడు. Now ended in divorce. और अब वो तलाक में है। పిలిచారు. Many senior Indians regret having left India after their children and their children's marriage and children's children. बहुत से ऐसे भारतीय लोग जो वहाँ गए, जब उनके बच्चे और बच्चों के उनके नाती पोतों की बारी आती है तो देखकर बहुत दुखी होते हैं। అక్కడికి వెళ్ళేట్టు అనేక మంది పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. And they regret now, अब वो पछताते हैं బాధపడుతున్నారు. but they can't come back. लेकिन अब वापस नहीं आ सकते। Why? क्यों? The roots of the children have gone into the soil. क्योंकि बच्चों ने वहाँ पर जड़ पकड़ ली है। పిల్లల వేర్లు అక్కడ బాగా పారిపోయాయి. What they lose is faith in God, क्या उन्होंने खोया? जीते परमेश्वर विश्वास को उन्होंने faith खो in दिया। the word of God. परमेश्वर के वचन में विश्वास को खो दिया। My dear people, प्यारे लोगों, to the end let us be faithful. अंत तक हम विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें, Faithful to the word of God. परमेश्वर के वचन की तरफ वफादार रहें। నమ్మకంగా ఉందాం. Be faithful to what the fellowship teaches, which was founded by senior Mr. Daniel and Joe. और स्वर्गीय भाई दानियल जी ने और भाई जो ने जो प्रभु का वचन सिखाया उसको भूले नहीं। గారు జోగారు ఆరంభించి నేర్పించిన సత్యాన్ని నమ్మకంగా ఉందాం. Don't think it was easy for them. ऐसा मत सोचो उनके लिए बड़ा आसान था। అనుకోవద్దు.
They had to walk the way of faith. उन्हें विश्वास के रास्ते पर चलना पड़ा। విశ్వాస మార్గంలో నడవలసి వచ్చింది. I challenge our people who come to the other countries. जो दूसरे देशों में जाते हैं मैं उनके सामने चुनौती रखती हूँ। వాళ్ళని సవాల్ చేపిస్తాను. None of you will come there without a guaranteed paycheck. बिना पैसे अगर किसी ने तनख्वाह नहीं आपको बताई तो आप वहां जा पहले बिना तनख्वाह के नहीं जाओगे। గ్యారెంటీ లేకుండా రారు. When we went, we had no paycheck. जब हम गए तो हमारे कोई तनख्वाह नहीं थी। వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఎలాంటి పే చెక్ లేదు. We had no medical insurance. ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस थी। ఇన్సూరెన్స్ లేదు. Our faith was in God. हमारा विश्वास परमेश्वर में था, దేవుని యందు ఉండింది. And that is, the Lord has led us till now. इसीलिए प्रभु ने अभी तक हमको संभाला है। ఇంతవరకు నడిపించాడు. Don't lose the word of God in your life. अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को मत खो। దేవుని వాక్యాన్ని కోల్పోకండి. Don't listen to the devil who says, as God said. शैतान की उस आवाज को मत सुनो जिसमें वो कहता है क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा है। Cling to the cross. क्रूज से लिपटे रहो, Bear the reproach of the cross. क्रूज की निंदा को सहो। God, నిందను అనుభవించండి. God has a future for you and your family and from generation to generation. तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर की आशीष तुम्हारे लिए है। మీ కుటుంబానికి తరతరాలకు ఒక సంకల్పం కలిగి ఉన్నాడు. I hope, భవిష్యత్తును కలిగి ఉన్నాడు. I hope all of you have read Hudson Taylor's life. मुझे आशा है कि तुम सब ने हडसन टेलर की जिंदगी को पढ़ा होगा। హడ్సన్ టైలర్ గారి జీవితాన్ని మీరు అందరూ చదవాలనుకుంటున్నాను. If you don't have, go buy a book with Hudson Taylor's life and read it. अगर आज तक नहीं पढ़ी तो जाके खरीदो और हडसन टेलर की जीवनी को पढ़ो। వెళ్ళి హడ్సన్ టైలర్ గారి పుస్తకం కొనుక్కొని చదవండి. For 4 generations they served in China. 4 पीढ़ी तक चीन में उन्होंने सेवा की। 4 తరాలుగా చైనాలో సేవించాడు. When recently the Boxer Revolution came, और कुछ समय पहले जब बक्सर आंदोलन आया రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు they want to kill all the white men. वो सभी गोरे लोगों को मार डालना चाहते थे। చంపేయాలని Many of the missionaries that were killed were from Hudson Taylor's mission. हडसन टेलर के मिशन से बहुत से मिशनरी मौत के घाट उतारे गए। స్థాపించిన మిషనరీని అనేక మంది చంపేశారు. But the church grows on the blood of martyrs. लेकिन कलीसिया जो प्रभु के शहीद हैं उनके लहू पर बढ़ती है। ఎదుగుతూ ఉంటది. So there is a strong underground church in China. इसलिए चीन में बड़ी ताकतवर गुप्त कलीसिया बनी है బలంగా ఉంది. And they produce converted people. और सच्चे मन फिराए लोगों को पैदा करती है। మారుమనసు పొందిన వారిని సిద్ధం చేస్తున్నారు. And the big companies want them for the job because they are reliable. बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं को नौकरी देना चाहती हैं क्योंकि वो भरोसेमंद हैं। వాళ్ళు నమ్మకస్తులు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వారు కోరుకుంటున్నారు. And still there is persecution for the underground church. अभी भी जो गुप्त कलीसिया है उसके ऊपर बहुत सताव है, But they are following God faithfully. लेकिन वो वफादारी से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। This is from generation to generation. ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहेगा। Christian faith is from generation to generation, not for one day, 2 days, then throw it off, run after the world. मसीह विश्वास 1-2 दिन के लिए नहीं है कि जी कर फिर फेंक दो और दुनिया के पीछे चलने लगो। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहना चाहिए। Search your own hearts. अपने दिलों को जांचो। హృదయాలు పరీక్షించుకోండి. The word of God is our standard, परमेश्वर का वचन ही हमारा मानदंड है। నిలబడేది. and we must serve the Lord to the end अंत तक हम प्रभु की सेवा करें వరకు మనం సేవ చేద్దాం. and glorify Christ by our lives and by our families. अपने जीवन अपने परिवारों से प्रभु की महिमा करें। మన జీవితాల ద్వారా యేసు ప్రభువును మహిమపరుస్తాం. Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you for the treasure in the word of God. हे पिता तेरे वचन में जो खजाना है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। కొరకై వందనములు ప్రభువా. Thank you for Senior Minister Daniel followed it. वरिष्ठ भाई दानियल जी तेरे वचन पे चले इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। మీకు వందనములు. In this day and generation, there are people around the world who are following thee, hard after thee. आज भी प्रभु इस पीढ़ी में ऐसे लोग दुनिया में हैं जो पूरा मन लगाकर तेरे पीछे चल रहे हैं। లోకంలో
ఉన్నటువంటి వారు లోకం యొక్క కఠినమైన వాటిని వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. Help us, Lord, to hold on to the truth of the word of God. हे प्रभु मदद कर तेरे वचन के सत्य को हम थामे रहें. దేవుని వాక్య సత్యాన్ని పట్టుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయండి. Help us to repent for all deviations. हर जगह जहां हम भटके हैं उसके लिए हम पश्चाताप करें. తప్పిన వాటన్నిటి విషయం మేము పశ్చాత్తాపడడానికి సహాయం చేయండి. Please have mercy upon us हम पर दया कर. కనికరించండి. and bless all the people we were baptized today. आज जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन पर आशीष दे. బాప్తిసం పొందిన వారందరినీ దీవించండి. Let them set their goal to follow the cross. क्रूस पे चल के पीछे चलने का मकसद वो ठान ले. దేవుని వెంబడించడానికి వారు గురి పెట్టుకోనివ్వండి. Please help us, Lord. प्रभु हमारी मदद कर. సహాయం చేయండి. I ask in Jesus' name. यीशु के नाम में मांगती हूँ. నామమున